Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. My dear respected listeners, sisters and brothers, Alhamdulillah, we are having our Monday session right now, and today, since it is the Shaban has started, the month of Shaban, inshallah today I will discuss some of the masail and ahkam of fasting, the rulings of fasting, some of them. चूँकि अभी शाबान शुरू हो गया और शाबान के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इंशाअल्लाह आज की निशस्त में इंशाअल्लाह हम रमज़ान या रोज़े के कुछ मसाइल सीखेंगे इंशाअल्लाह. कुछ रमज़ान के रोज़े के कुछ मसाइल का क्या मतलब? मसाइल का मतलब ये है कि किस तरीके से हम रोज़ा रखें या किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, कैसा रोज़ा रखना चाहिए, कौन लोग ऐसे हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं जिनका उज़र है, इन चीज़ों के बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह. Today I will talk about some of the rulings of fasting. We say in Urdu roza, but the real word in Arabic is siyam. Saum means fasting is the singular, or plural is siyam. We have the word siyam in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. That roza and fasting has been prescribed on you. Roza and fasting has been made fard on you and obligated on you, just like it was made fard and obligated on the previous nations before you. لعلكم تتقون, so that you may attain taqwa. कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों को क्या मतलब? हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने वाले हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं. अल्लाह पाक फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरीके से पिछले उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं. लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम अल्लाह से डरो. तो today I will talk about some of the masail of fasting. Now, who has to do? We also let me remind you, when we come to learn ilm, when we listen to any talk, we come to the masjid or we're listening or we're any type of gathering in which we are learning ilm of deen. This is something very, very great and very, very rewarding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith to the near meaning that to learn one ayat of Quran is better than 100 rakat of nafil salat. To learn one ayat and one verse of Quran is better than 100 rakat of nafil salat. And to learn one category or chapter of ilm means, for example, how to make fasting, how to make hajj, how to do nikah, what are the masail of talaq.
to learn one chapter of ilm is better than 1,000 rakat of nafal. Imagine how long it would take for me to make 1,000 rakat of nafal salat. Even if I make it 1 minute a rakat, it will take 1,000 rakat, 1,000 minutes for me to make 1,000 rakat. Plus I will be so tired and it will be so difficult for me. And 1,000 minutes is 1,000 divided by 60 is equal to about 17 hours. If I'm doing nafal for 17 hours, I will be able to do 1,000 rakats. But more rewarding than this is to learn some ilm and masail and ahkam of the deen of Islam, of ilm. हदीस पाक का मफहूम है कि जो कुरान की एक आयत को सीखे, जो कुरान की एक आयत को सीखे, उसके लिए 100 रकात नफल नमाज से ज़्यादा सवाब मिलता है। 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब किस में मिलता है? एक आयत सीखने में। और इल्म का एक बाब सीखना। इल्म का एक बाब का क्या मतलब? रोज़े किस तरीके से रखना है, नमाज किस तरीके से पढ़ना है, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, हज कैसे करना है, या निकाह किस तरह करना है, या तलाक़ के मसाइल सीखना, इसको कहते हैं इल्म का एक बाब। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफल से ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ अंदाज़ा, 1000 रकात पढ़ने में कितनी देर लगेंगी हमें? How long will it take for us to make 1,000 rakats? Even if you do 1 minute a rakat, 1 मिनट में एक रकात अगर पढ़ भी ले, फिर भी 17 घंटे तकरीबन लगेंगे हमें। 17 घंटे में हम 1000 रकात पढ़ेंगे, वो कितना हम थक जाएंगे, वो तो नामुमकिन है हमारे लिए। लेकिन थोड़ी देर बैठकर और इल्म हासिल करना, इल्म का एक बाब हासिल करना, ये 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अफजल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर रमज़ान से पहले और जब भी कोई मौका हो, जैसे हज से पहले और नमाज, हम हर चीज़ को हम सीखें। और सीखेंगे हम कहाँ से? हम उलमा से सीखेंगे। क्यों हम उलमा से सीखेंगे? अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछा करो जब तुम्हें नहीं मालूम हो। अहले ज़िक्र का मतलब उलमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला says in the Quran Kareem, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of dhikr, yani the people of knowledge. Ask the people of knowledge if you do not know. That is why it's so necessary before Ramadan, before any action of deen, for example Hajj, or before nikah, or any type of thing, we must learn the ahkam and the masail and the rulings from the ulama and ask them. Now, who is required to fast? रोज़े किस पर फ़र्ज़ है? किसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे? तो basically हम कहते हैं every Muslim, every person who's a Muslim, who's sane, yani somebody who's not mentally has mental problem, who's not insane, every Muslim who's sane and adult का मतलब he or she is past baligh and healthy, then that person, and not traveling. So if a Muslim is sane in his right mind and he or she is adult and he or she is healthy and not sick and he or she is not traveling, then it is necessary to make roza, to make fasting. A woman who is in her menses and monthly period will not fast. But what will she do? The number of fasts that she missed, maybe 7, maybe 3, maybe 5, maybe 10, whatever number she missed in the Ramadan because of her monthly cycle, she will count that and then she will make it up after Ramadan. She will make up the qada. Qada means make up. अब किस पर रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी किस शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे? रोज़ा रखने के लिए कौन, यानी किस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? हर मुसलमान जो अपने सही दिमाग में हो, यानी वो पागल ना हो, वो दिमागी माजूर ना हो, और वो बालिग हो। बालिग का मतलब अडल्ट हो, मैच्योर हो, और मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि बालिग किसको कहते हैं। और हेल्थी का मतलब तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो, और वो बंदा या बंदी जो मुसाफिर ना हो। मुसाफिर का मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हो। तो ऐसे शख्स पर, ऐसे मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जो औरत अपनी माहवारी में हो, वो औरत वो रोज़ा नहीं रखेंगी, बल्कि जितने दिन उसने मिस किया माहवारी की वजह से, चाहे 3 दिन हो या 10 दिन या 8 दिन या 5 दिन, जितने भी दिन हो, वो गिनकर उसको
रोज़ा रमज़ान के बाद रखेंगी, उसको कज़ा करेंगी जितने रोज़े मिस हुए माहवारी की वजह से. Fasting is not necessary on a non-baligh, a minor. In English we call a minor, a person who's now what is a minor in Islam? In English or in legal terms, a minor is somebody less than 18. 18 is an adult. You cannot get your driver license until you're 18 in New York State. But in Shariat, 18 is not the limit for becoming baligh or becoming mature. For a person to have the fasting fard on him is not necessary. 18 is not the age, but rather physically mature, baligh. In Arabic we say baligh. Baligh means he or she has reached puberty. What is baligh? For a boy, a baligh will be 12 and 15 years, 12 and 15. Yani minimum, a boy will not become baligh in Islam, will not become baligh before 12. And by 15, even if he doesn't show any signs, he doesn't have any beard, he doesn't have any type of signs of manhood, still when he becomes 15, we will consider him to be baligh. And for a girl, it's 9 to 15 years. Yani, the girl can become baligh at 9 years old if she has her monthly cycle starting at that time, anywhere from 9 to 15. And when she's 15, even if she didn't have any signs of maturity, physical maturity, we will consider her to be baligha. So everybody becomes baligh by 15. And boys can become baligh between 12 and 15. And girls will become baligh between 9 and 15. And these years are lunar years, because remember the Islamic calendar is based on the moon, the lunar year, which are a little bit shorter, about 10 days shorter than the so when the kid is 14 and a half, he's actually 15 Islamically. अब किस बच्चे पर यानी बच्चा कब कितनी उम्र से उस पर रोज़ा फ़र्ज होता है? तो इसलिए इसके लिए ये है कि 15 साल यानी बच्चा के लिए यानी बेटे के लिए यानी लड़का के लिए 12 से लेकर 15 तक, यानी 12 साल जब लड़का पहुंच जाता है तो हो सकता है वो बालिग हो गया. और जब 15 साल हो गया, अगरचे उसमें कोई निशानी नहीं है बुलूग की, हो सकता है दाढ़ी नहीं निकली हो 15 साल की उम्र में भी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे शरीयत के एतबार से वो बालिग ही है, यानी उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया. तो 15 साल तक तो रोज़ा तो फ़र्ज़ हो ही जाता है, और उससे पहले भी हो सकता है, 12 साल के बाद भी, जब भी लड़के के लिए ज़रूरी है कि वो क्या कहते हैं रोज़ा रखें. लड़की के लिए क्या है? लड़की के लिए 9 से लेकर 15 तक उम्र, यानी 9 साल की उम्र में अगर वो बच्ची उसका शुरू हो जाए माहवारी, तो फिर वो बालिगा बन गई और उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है, नमाज भी फ़र्ज़ हो गया, और वो उसको हम बच्ची नहीं समझेंगे शरीयत में, बल्कि हम कहेंगे ये एक बालिगा बच्ची है या औरत है, यानी उस पर सारी चीज़ें फ़र्ज़ हो गया. और ये भी, और लड़की के लिए भी 15 साल तक, 15 साल अगरचे माहवारी ना भी शुरू हो जाए, फिर भी हम समझेंगे कि ये बच्ची बालिगा है और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है. और मैंने ये भी बताया था इंग्लिश में कि कानून के एतबार से बच्चा तो 18 साल में आदमी होता है या उसको अडल्ट समझा जाता है, लेकिन शरीयत में हम 18 साल तक हम नहीं गिनते, हम 18 साल तक नहीं क्या कहते इंतज़ार करते, 15 साल मैक्सिमम तक वो बच्चे पर सारे चीज़ें फ़र्ज़ हो जाते हैं. Now I will talk to you about a sick person. Should a sick person fast? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, He mentions some of the excuses, the legitimate excuses for which a person can miss their fast. One of them is sickness, illness. Now illness doesn't mean a slight sniffle or a slight headache, or somebody is feeling a little bit uncomfortable in the morning and he says, I'm sick. Sickness means severe sickness. Such a sickness that it will be difficult for a person to fast. Very difficult. Yani such a sickness that if he fasts, then the sickness will increase or he may even die. And if a person is sick, it's better to ask a Muslim doctor. If a Muslim doctor says that you are so sick that you should not fast because your fasting will harm you and will cause your sickness to increase significantly, or it may cause you to die, then what will happen? Then if the Muslim doctor says that, then
he or she can miss the fast. That person is excused from fasting due to sickness. But this does not mean that they can just give some money and that's it. No. But rather, this is a temporary sickness. This sickness may be for a few days in Ramadan, or might even be in the whole Ramadan. May Allah protect us from any sickness. But this sickness will go away. So what will happen? When the sickness will go away after Ramadan, maybe 1 month after Ramadan, maybe 2 months after Ramadan, any time after Ramadan, the sickness will go away. Now this person has to make qada. What does qada mean? Qada means make up. If a person missed, for example, 13 days of fasting because he was sick, he had a very high fever, or maybe he was in the hospital, may Allah protect all of us, and in that during his stay in the hospital for 13 days, he could not fast because the doctor told him that his fasting will be detrimental to his health, or cause him sickness extra, or cause him death. So for 13 days he did not fast. No problem, he is excused. He or she is excused. But after Ramadan finishes, when he gets healthy again, he has to make up 13 days of fasting, and it's better to make up those 13 days before the next Ramadan comes around. He can make it any time, in the winter, in the summer, in the cold weather, in the hot weather, in the short days, in the long days, doesn't matter. Qada can be done at any time, any day. अब बीमार शख्स के लिए क्या है? बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है या नहीं? तो इस मसले में ये तफसील है कि ऐसी बीमारी जो सख्त बीमारी हो, ये नहीं कि थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा थका हुआ हो तो कह देता है कि भाई मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगा, नहीं, इसको बीमारी नहीं कहते। बीमारी का मतलब सख्त बीमारी, ऐसा सख्त बीमारी जिसमें अंदाज़ा हो, जिसमें गालिब गुमान हो कि अगर मैं रोज़े के अंदर मैं ये रोज़ा रखूँगा अब इस बीमारी में, तो मेरी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी, मुझे सख्त तकलीफ़ होगी, मेरी बीमारी में ज़्यादती होगी, या मैं मर जाऊँगा। या डॉक्टर के है, मुसलमान डॉक्टर के कि देखो आप बीमार हो, ऐसे बीमार हो कि रोज़े रखने से आपको बहुत नुकसान होगा, रोज़े रखने से आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है, और या तो आप मर सकते हो। तो फिर इस हालत में ऐसा बंदा या ऐसी बंदी रोज़ा छोड़ सकता है बीमारी की वजह से। तो बेहतर यह है कि मुसलमान डॉक्टर से राय हम पूछ लें कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या मैं रोज़ा रख सकती हूँ। अगर मुसलमान डॉक्टर कहे नहीं आप रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर आप रोज़ा रखें। एक और बात, बाज़ लोग बीमार है, जैसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में ये होता है कि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए या शुगर लो हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरा दिन गुजर जाए और ब्लड शुगर का कोई मसला ही ना हो। तो ऐसे बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए रोज़ा शुरू कर दे सुबह से, और खुदा न खास्ता अगर दिन में इफ्तारी से पहले, मगरिब से पहले ऐसी हालत हो जाए जिसमें ख़तरा हो कि बीमारी बढ़ जाए या मर जाए, ख़ास तौर ये लो शुगर की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है, तो उसमें क्या है, रोज़ा तोड़ दे बीमारी की वजह से। लेकिन सिरे से रोज़ा ना ही रखना कि पता नहीं मैं रख सकूँगा या नहीं, तो ये तो मुनासिब नहीं है, बल्कि रोज़ा शुरू कर ले। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे इतना बीमार नहीं है कि रोज़ा नहीं रख सकते, कभी कभार हो जाता है कि रोज़ा रखते रखते दिन में बहुत कमज़ोरी हो जाती है, तो फिर उसमें क्या है कि आप रोज़ा तोड़ लें। बाज़ लोगों को आज़मा होता है, आस्थमा यानी सांस की बीमारी, तो वो आस्थमा जो अटैक होता है वो कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रोज़े ही के अंदर हो सकता है रात को हो। और आस्थमा में वो इनहेलर जो इस्तेमाल होता है, इनहेलर पंप, उसमें दवाई होती है, और वो चूँकि गले में जाता है, हलक में जाता है, इसलिए रोज़ा टूट जाता है, उसमें दवाई होती है। तो ऐसे शख्स को जो आस्थमा की बीमारी में हो वो रोज़ा शुरू कर ले, और अगर खुदा न खास्ता दिन में इफ्तारी से पहले आस्थमा पंप का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो तो इस्तेमाल कर ले और रोज़ा तोड़ दे, और कज़ा कर ले एक कज़ा। लेकिन सिरे से रोज़ा नहीं रखना कि शायद हो सकता है कि मुझे आस्थमा की अटैक हो, ये मुनासिब नहीं। I was explaining in Urdu, a very common disease is the diabetes. Some people have diabetes and some people have asthma, the breathing problem. So, but most of the time,
they are able to fast. Sometimes it could happen, may Allah protect everybody, that the person while fasting who has diabetes, their blood sugar may go very low. And then that's very dangerous. It can lead to death. So what is the hukam? That the person who has diabetes or asthma, maybe most of the time the asthma doesn't always occur during the daytime. It can happen anytime. Depends. Sometimes you get triggered by dust or by smoke or something, or just something else. So that person should not leave the fast from the beginning, but rather that person should fast, hoping that I will be able to get through the day. I will be able to get up to the iftar time until without any asthma attack, may Allah protect, or any type of low sugar level. And then alhamdulillah, he'll be able to fast. And if khuda na khasta, if God, Allah forbid, the blood sugar does go very low during the day, and it's dangerous, or the asthma attack does occur and the person has to use the pump, the person has to use the pump, and the pump will break the fast, because that has medicine inside of it, and that medicine goes down your throat and into the stomach, and then the blood, etc. So what a person will do, he should start the fast, he or she, if khuda na khasta, Allah forbid, has a asthma attack, use the pump, break the fast, and make up qaza for that day, make it up that day. Achha, one more thing, if anybody has any question, they can ask me at the end of the bayan. The number for asking or texting questions or even calling is a separate cell phone number, 516-359-3830, 516-359-3830. जिसको सवाल करना हो आखिर में वो सवाल भी कर सकते हैं, ये अलग फ़ोन है, सेल फ़ोन नंबर 516-359-3830 for question and answer. Now let me talk about traveling. Can somebody miss the fast because of traveling? Safar? अगर कोई शख्स सफ़र पर जा रहा है, उम्र के लिए जा रहा है, या पाकिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, हो सकता है कैलिफोर्निया जा रहा हो, तो क्या उसके लिए जायज़ है कि रोज़ा छोड़ दे? Can a person traveling for Umrah, or maybe California, or maybe going to Pakistan, Bangladesh, anywhere, can that person miss the fasting? So the hukam is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran Kareem, a person who's missing the who's traveling, then that person is allowed to miss the fast. He doesn't have to miss it. If he or she wants to, they can miss it. It's up to them. It's better to keep the fast, but if the person feels that it'll be too hard for me, sometimes the days become very long, especially when you're traveling from Umrah to this direction, when we're traveling from the east side to the west side, we're traveling from Saudi to New York, or Pakistan to New York, then what happens, the day becomes very long. But it's allowed. Sometimes a person don't mind. You're on the plane, you're sleeping anyway. So it's up to you. If you're traveling in the fast, then a person can miss the fast if he or she wants. But it's better to fast because the barakat of Ramadan are there. And if a person does miss the fasting because of traveling, then the person will have to make up the days that he or she missed because of traveling. And in traveling, we have to make sure it's 48 miles. Traveling doesn't mean from here to Queens. If a person is traveling and leaving their city, our city would be Elmont or Nassau County or Valley Stream, then when a person is leaving their town and the intention of going 48 miles or more, actually 54 miles or more. 54 miles. A person is traveling from here to Florida, from here to California, from here to Boston, or traveling overseas. Then as soon as he leaves his city, then a person can he can miss the fasting. But he has to leave before Sehri time. If my flight is at 3 o'clock in the afternoon, then I cannot miss fast that day. I have to start the fast in New York, and then the next day, if I'm still traveling, which I will be if I'm going to Pakistan or Saudi or something, then I can miss that day. But if I'm traveling before Sehri time, let's say my flight is 12 o'clock midnight, or my flight is 2 o'clock in the morning before Sehri, and I'm out of the town, I'm out of the city, I'm on my flight already, then I can miss the next morning fasting. अब सफ़र के बारे में क्या है, मुसाफिर के बारे में? मुसाफिर ये है, मुसाफिर किसको कहते हैं शरीयत में? शरीयत में मुसाफिर उसको कहते हैं कि जो 52 या 54 मील 54 माइल से ज़्यादा सफ़र करे.
एक बंदा ट्रैवल कर रहा है यहाँ से कैलिफोर्निया, यहाँ से फ्लोरिडा, यहाँ से बॉस्टन जा रहा है, या यहाँ से उम्रा के लिए जा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है, तो वो जाहिर बात है ये तो बहुत लंबी मुसाफत है। तो क्या करे वो, अगर चाहे तो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि क्या कहते हैं, वो शुरू करे अपना रोज़ा, क्या अपना सफ़र शुरू करे सहरी से पहले। अगर फ़्लाइट है मसलन 3 बजे शाम को, 3 बजे दोपहर को मेरी फ़्लाइट है, तो उस दिन में मुझे रोज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि दिन का जो सुबह का जो हिस्सा है उसमें तो मैं मुसाफिर नहीं हूँ, उसमें तो मैं अपने घर में हूँ, अपनी जगह पर हूँ, तो उस दिन में रोज़ा नहीं छोड़ सकता। अगले दिन अगर मैं सफ़र में हूँ सहरी से, चूँकि मैं सहरी से पहले मैंने सफ़र शुरू कर लिया, तो फिर अगले दिन मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ। बेहतर तो ये है कि रोज़ा रख ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं रोज़ा तोड़ भी लूँ या कि छोड़ भी लूँ, देखो एक मरतबा रोज़ा रख लिया तो फिर रखना पड़ेगा, शुरू कर लिया तो पूरा करना पड़ेगा, इल्ला कोई सख्त मजबूरी हो। लेकिन सिरे से शुरू से नहीं रखा सफ़र की वजह से, ये जायज़ है। सफ़र की वजह से अगर सिरे से सुबह से ही नहीं रखा रोज़ा, आपने सफ़र शुरू कर लिया सहरी से पहले और आपने रोज़ा नहीं रखा, कोई मसला नहीं है, आपके लिए ठीक है, जायज़ है। लेकिन ज़रूर ये है कि जितने दिन आपने सफ़र की वजह से आपको मिस हुआ, चाहे 3 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, या पूरा रमज़ान भी हो, इतने दिन आपको कज़ा करना पड़ेगा। कज़ा का मतलब मेकअप। What about a woman who is pregnant or breastfeeding? Does she have to fast, or can she just pay some money and not fast? So the ruling for pregnant women or women who are breastfeeding is similar to the ruling for a sick person, because this is a temporary condition. Inshallah, their pregnancy will end, their breastfeeding will end. If the woman feels that if it will harm that she's pregnant, it will severely harm the baby, fasting, or the doctor tells us fasting will harm the baby, maybe she has some, may Allah protect, diabetic condition or blood pressure condition. Normally it's fasting in while pregnant is not harmful, but if a Muslim doctor says it was harmful for the baby or harmful for the mother, or the breastfeeding is such that if she doesn't eat during the day, she will harm the baby because she will not have enough milk, then she is allowed to miss the fast. But she will not give any money, but rather as many days she missed the fast because of her pregnancy or because of her breastfeeding milk, then she will make up those days, even if it's the whole month. वो औरत, वो खातून जो प्रेग्नेंट हो, उम्मीदवार हो, या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, क्या उसके लिए जायज़ है वो रोज़ा छोड़ दे? तो मसला यही है, तकरीबन वही मसला जिस तरीके से हमने पहले बताया, जो शख्स बीमार होता है उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोड़ना का मतलब ये है कि छोड़ दे और जितने दिन मिस हुए वो उसका कज़ा कर ले। तो अगर अंदाज़ा हो कि मैं अगर खातून वो प्रेग्नेंट है और ज़्यादा सख्त क्या कहते हैं नुकसान होगा बच्चे को या वालदा को, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और दूध नहीं आएगा नहीं रोज़े की वजह से और बच्चे को नुकसान होगा, तो इसमें बेहतर ये है कि मुसलमान डॉक्टर से राय ले ले। मुसलमान डॉक्टर अगर कह दे कि आपको नुकसान है या बच्चे को नुकसान है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन कज़ा करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ पैसे देकर वो जान छुड़ा ले, बल्कि क्या कहते हैं रोज़ा रखना है, कज़ा रखना है, कज़ा का मतलब later. So now we have to finish early today because we have to give out the prizes to the Maktab students. Anybody has any questions can call at the number or text at the number, sorry, is better, 516-359-3830. Any questions, inshallah, I will try to answer them. Wallahu alam. Inshallah, next week we will do some more masail of fasting. अगले हफ्ते कुछ और मसाइल हम रोज़े के बारे में हम करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानल्लाह, अब दुआ कर लो, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।